Mohammad Faiz in the attack and is being welcomed with a six. That's a monstrous hit from the batter, Jaipal Reddy. What a shot that was! That was in his half, but he went with the shot and clears the field with some ease. First maximum of the match coming off the blade of Jaipal Reddy. Such a sweet timer of the ball. So we have lost a ball and then we have got a new ball for Mohammad Faiz to do some magic. Jaipal has, hit that one out of the park on the first ball of the over. This time a little short, cuts away, straight to the man at backward point, Abid Azharuddin, the man who took a brilliant catch in the first over. RR Stones taking on the Minex Blasters in this encounter, the last of the day. This time he plays it on the up. That's a good looking shot from Mahipal Reddy. Jaipal Reddy, sorry. Wow, that was so effortlessly done. He stood tall, played it on the rise, and got that boundary. Good comeback. This one's much better on the up, drawing the batsman forward and again beating the batsman with the outswing. So that's much better for Mohammad Faiz. He needs to learn the lesson very quickly because these two batters will not let them ball if you ball any looseners. There's very less margin of error in this format of the game. Shot again, single. Last ball of the over coming up. Minex Blasters have won the toss and decided to bat. This time again, punched off the back foot, single to finish the over. After 2 overs, it's 14 for 1. The Minex Blasters are 14 for 1. They have rocked back early, the batter to dismissed.
Muzammil back for his second over. Oh, that was a slower one. He took the pace off, but the batsman was equal to the task. And an excellent shot that one. He waited for the ball to come to him and then hits it over the fielder to get that boundary. This is good batting from Jaipal. Shivansh, pardon, it was Shivansh who played that shot. This time a little shot, and again he went on the back foot immediately. There wasn't much pace on offer from Muzammil, but he went on with the shot and threads the gap nicely to get that boundary. Shivansh, 2 in 2 for Shivansh. Bandral, the score moves to 22 for 1 after 2.3 overs. Syed Muzammil has got a wicket in his first over, but this over he hasn't bowled nicely. This time inside edge and the ball racing away to the square leg region for a single. Mohammad Muzammil likes varying his pace, likes mixing it up. Last two balls left in the over. Jaipal on strike. This time Fuller, it's in the slot, just short of the man at short covers. Single for Jaipal Reddy brings Shivansh back on strike. So this is the last match of Sunday. It's the season 42nd season of the Elite One Champion tournament. Minex 11 taking on the RR Stone. It's in the air. Abed Azharuddin calls for it and takes it. The second wicket has gone down, and Shivansh, just looking to play the big shot, clears the infield, just manages to hit that one straight to point fielder. That's an easy catch for a man standing at point. Abed Azharuddin, who doesn't make a mistake. The second catch for Abed Azharuddin, two wickets inside the power play, 24 for 2. Mohammad Faiz to continue back for his second over. He was expensive in his first over, went for 12 runs. This time starts with a short one and gets the treatment.
Jaipal Reddy standing tall and hitting that were over the point fielder. No chance. Nobody moves, and the ball went in the fence like a flash. That was sweetly timed by Jaipal. Fairs not learning the lesson, either bowling short or bowling too full. He has to find his length very quickly. He has conceded 16 in his 1.1 over that he has bowled. This time, much better, much better. This is the length that I was talking about. Not too full or not too short. Oh, they'll come back for the second here. The keeper should have done a better job there. RR Stones, a very strong side, up against Minex Blasters, was also looking very good. This time in the slot, again bowling it too full, not learning the lesson. Jaipal Reddy taking him for a couple of runs in this over. Second boundary for Jaipal Reddy. This was in his half, and when the field restrictions are on, the batters doesn't think much. They just likes going after the bowling. It's not easy bowling in the power play. You have to be very accurate with your line and length. At the moment, Mohammad Faiz is not learning the lesson. Is either bowling short or full and paying the price, paying a very heavy price. To be honest, change in field now. The mid wicket comes in, the long off and a long on back on the boundary. We'll have to wait what Faiz does now. Short cuts away straight to the man at point who was stationed exactly at the circle. So easy single on offer for Jaipal Reddy, who moves to 23 of just 12 balls, striking almost 200. Jaipal, 11 runs of the first 4 balls. This is good from Mohammad Faiz, just attacking the stumps, bowling it slightly short of a good length, keeping the batsman honest. Last ball of the over coming up. Much better, taking the pace off, bowling into the wicket, not allowing the batter to free their arm. Single to finish the over after 4 overs. The Minex Blasters are 37 for 2 after 4 overs. Syed Muzammil back for his third over. Starts with a slow one. That one just went over the short fine leg fielder for a boundary. Again, a pace off delivery on the pads of the batter, and it's a boundary for Jaipal Reddy, who moves to 28 of 14 balls, striking at exactly 200. You're asking for trouble bowling on the pads of a subcontinent batters, and Jaipal Reddy too good to miss out on that easy loosener from Mozambique. 2.1 overs, 15 runs, 2 wickets for Mozambique. He has picked up 2 wickets, got 1 wicket each in his first 2 overs. Good comeback. This is good bowling. The current run rate is 9.46 at the moment.
Shot this time on the body. Call for a quick single. In the end, the batsman will make it. Good running between the wickets. These two are very quick, and also they have played a lot of cricket. These two teams together, so they knows each other's strengths. Single. So these two are rotating the strike when they're not getting the boundaries. 6 runs coming off the first 4 balls. Can Muzammil pick one more here? Nicely paid towards the point. Single. Abid Azharuddin having a shy at the stumps. So far, so good for RR Stones, though they have lost the toss and bowling first, but they have still picked up two crucial wickets, two important wickets inside the power play. On the other hand, Minex Blasters are still going hard at the bowling. This time opens the face of the bat and guides it towards the short third fielder to get a single. After 5 overs, it's 45 for 2 after 5 overs. Awais Ahmed, the new bowler introduced into the attack in the 6th over, the last over of the power play. Ankit Kumar playing it off the back foot and gets a single, brings the dangerous Jaipal Reddy back on strike. On the pads, and it's worked away nicely on the leg side for a boundary. This is easy picking for Jaipal Reddy. That's too easy for classy right-hander. All he needs to do is get some bat on that one and place it in the gap, and which is what he has done it in such style. Shot of authority from Jaipal Reddy. This time fuller and wider. The batsman had to pierce the gap between the point and the backward forward fielder. And he does that in style to collect his second boundary of the over. Jaipal Reddy raced to 38 of just 19 balls. It's in the air, and we'll have to wait for the umpire signal. Is it a six? Yes. Abed Saruddin confirms that. He has caught that one nicely, but just kept his foot on the fence. The batsman, the bowler Awais Ahmed thought that he had his man, but Abid just touching the ropes on the boundary, and it's a six for Jaipal.
Yes, this time the fielder makes no mistake at point. The third wicket has gone down for the Minex blaster. It's Mudassir who makes no mistake. It's 60 for 3. The new batsman in is Tiramala. Nicely played it towards the square leg region for a single. A couple of runs, a couple of boundaries, and a six in that over. Also, a prized wicket of Jaipal Reddy. 6 overs completed. It's 61 for 3. Mirza Muzakir into the attack. Single to long on. It's a wide.
वाइड इस दफा आवेश वहां पर अपील करते हुए सवाल पूछ रहे थे एम्पायर से, और एम्पायर ने कहा ये तो वाइड गेंद है, आपको वापस डालनी होगी। शरत रेड्डी अब तक अपना खाता नहीं खोला है। ये बेहतरीन गेंद, एक्स्ट्रा बाउंस मिला वहां पर जिसके चलते कीपर को तकलीफ हुई उसे कलेक्ट करने में। आवेश अहमद पहले ओवर में अपने काफी महंगे साबित हुए थे, लेकिन इस ओवर में काफी नबीतुली गेंदबाजी कर रहे हैं। 4 विकेटें निकाली है अभी तक आरआर स्टोन्स के गेंदबाजों ने। अच्छे अच्छी गति से रन बना रहे हैं माइनिक्स ब्लास्टर्स के बल्लेबाज, लेकिन उन्होंने 4 इंपॉर्टेंट विकेट्स गंवाए हैं अब तक, जिसके चलते मैं समझता हूँ आरआर स्टोन्स दोनों में ज्यादा खुश होंगे इस स्कोर कार्ड को देखकर। वो जानते हैं उन्होंने बेशक रन खर्च किए, लेकिन उन्होंने अच्छे विकेटें हासिल की है। अच्छी शॉट वहां पर आगे निकल कर खेला अंकित कुमार ने, और 1 रन मिलेगा। काफी अच्छा शॉट था वो, अच्छी तरीके से टाइम किया था, लेकिन सीधे प्लेयर के हाथ में गई गेंद, मिड ऑफ के, लॉन्ग ऑफ के। इस बार बड़ी शॉट खेलना चाहते थे, टाइम नहीं की ठीक से, सीधा स्वीपर कवर के फील्डर के हाथ में। लकीली वो इतनी अच्छी तरीके से टाइम नहीं हुई थी। मिर्जा मुजक्किर अपनी दूसरी ओवर लेकर। एक पार्टनरशिप की दरकार वहां पर माइनिक्स ब्लास्टर्स को। काफी विकेटें गंवाई है, और विकेटें नहीं गंवा सकते क्योंकि वो जानते हैं कि इसके बाद ज्यादा बल्लेबाजी बची नहीं है। अच्छी गेंद वहां पर स्पिन के लिए खेलना चाहते थे, टप्पा खाकर अंदर की तरफ आई विद द आर्म, मेकर्स नेम की तरफ लगी, और कोई टाइमिंग नहीं उस पर, सीधे लॉन्ग ऑफ के फील्डर के हाथ में 1 रन के लिए। इस ओवर से 3 रन अब पहली 3 गेंदों में। और एक बड़ा शॉट की तलाश में उठा दिया, उसे देखना होगा। वहां पर बेहतरीन एफर्ट वहां पर इम्तियाज का, जो कि लॉन्ग ऑन से दौड़ कर आए उस कैच को पकड़ने के लिए। ऑलमोस्ट एक बेहतरीन कैच पुल ऑफ किया था, लेकिन आखिरी मोमेंट पे गेंद उनके हाथ से छिटक गई और बाउंड्री लाइन की तरफ चली गई। 4 रन मिलेंगे वहां पर अंकित कुमार को। अच्छा एफर्ट वहां पर इम्तियाज का। 6 रन मिलेंगे वहां पर, माफ करना। बड़ी शॉट लगाई, उसके बाद सिंगल लिया वहां पर अंकित कुमार ने। अच्छा घटता हुआ ये ओवर। 10 रन इस ओवर से पहली 5 गेंदों में। और अपील वहां पर, डॉट बॉल। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। 9 ओवर के बाद 79, 4 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर के बाद माइनिक्स ब्लास्टर्स 79 आफ्टर 9 ओवर्स। आवेज अहमद अपनी तीसरी ओवर लेकर, शॉर्ट बॉल के साथ ओवर की शुरुआत। 1 रन वहां पर पॉइंट की दिशा में। शरत रेड्डी 4 रन 9 गेंदों में।
अच्छी तरीके से उसे खेला बैक फुट से। स्वीपर कवर के हाथ में वो गेंद, 1 रन मिलेगा शरत रेड्डी को। 10 गेंदे, 5 रन लगाए उन्होंने, उनको एक मूव ऑन करने की जरूरत है। 50 का स्ट्राइक रेट उनका। इस दफा आगे निकला और उसे हाफ वॉली बनाया बेहतरीन तरीके से, कवर्स की दिशा में, कवर्स के फील्डर के ऊपर से खेला, कोई मौका नहीं वहां पर। बेहतरीन चौका, सीमा रेखा के बाहर गेंद, अंकित कुमार के बल्ले से आता हुआ ये चौका। और इस दफा ऑन साइड की दिशा में सिंगल लेना चाहते थे, इनसाइड एज लगी और पैड पर लगकर वहीं रही गेंद, जिसके चलते डॉट बॉल। इस ओवर से 6 रन 4 गेंदों में। रन रेट काफी बेहतरीन वहां पर, लेकिन एक परेशानी की बात जो है वो है विकेट। 4 विकेटें गंवाई है। 2 रन की तलाश में, चांस रन आउट का, और ये खराब थ्रो। अगर सटीक थ्रो होता तो एक और विकेट मिल जाती वहां पर, 1 रन मिलेगा। मिड विकेट की तरफ से काफी अटैक करके आए थे फील्डर, उसे बेहतरीन तरीके से कलेक्ट किया, लेकिन थ्रो थोड़ा सा कीपर के हाथ में नहीं गई, जिसके चलते बच गए वहां पर शरत रेड्डी। और एक बड़ा शॉट, इस दफा 6 रन मिलेंगे, 4 रन, माफ करना 4 रन, एक बाउंस के साथ वो गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। 10 ओवर की समाप्ति, 10 ओवर की समाप्ति, 90 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 90 for 4 आफ्टर 10 overs।
New bowler introduced into the attack is Mir Roshan Ali, 100 up for the Minex Blasters, 100 in the 12th over of the innings, 100 for 4 in 11.1 over. Roshan Ali setting his field right. Flighted one, it's in the air. There is a fielder, but will not go to the man at long on. Abed Azharuddin doing the fielding there. Only a single. हवा में गेंद और यहाँ पर इम्तियाज ने एक मौका गवा दिया. एक आसान मौका था ये. अच्छी तरीके से ग्राउंड कवर किया. बॉल तक पहुंचे लेकिन उसे लपक नहीं पाए. पिछले 2 ओवर में दो दो कैचेस छुटी है माइनिक्स ब्लास्टर्स के बल्लेबाजों की. थोड़ा सा लैप्स इन कंसंट्रेशन वहां पर आर स्टोन के फील्डर्स के द्वारा. अच्छी गेंद इसी बीच रोशन अली के द्वारा. डॉट बॉल. 3 रन इस ओवर से 4 गेंदों में. डाउन द लेग साइड. यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रन मिलेगा. एक्स्ट्रा रन खाते में जुड़ जाएगा वहां पर माइनिक्स ब्लास्टर्स के खाते में. ये लेग ब्रेक और बेहतरीन तरीके से उसे कैप्ट किया. बेल्स को निकाला लेकिन गेंदबाज क्रीज के अंदर मौजूद. अच्छी ओवर घटती हुई यहाँ पर रोशन अली की. सिर्फ 4 रन इस ओवर से 5 गेंदों में. आखिरी गेंद इस ओवर की आनी बाकी. हवा में गेंद इस दफा. वहां पर कोई गलती नहीं की फील्डर ने. बेहतरीन कैच वहां पर मुजक्किर के द्वारा. मिर्जा मुजक्किर वहां पर कवर्स में मौजूद थे और उन्होंने कोई गलती नहीं की. इस कैच को नहीं छोड़ा. 5वीं विकेट हासिल की वहां पर आर आर स्टोन्स की तरफ से. और मीर रोशन अली अपने पहले ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी की और पहली विकेट हासिल की. शरत रेड्डी वापस जाते हुए. नए बल्लेबाज स्टॉइनिस आए हैं. संजय स्टॉइनिस. मिर्जा मुजक्किर जो कि बेहतरीन कैच लिया था उन्होंने पिछले ओवर के आखिरी गेंद पर आए हैं गेंदबाजी के लिए. 3 ओवर कोई मेरिन नहीं. 22 रन खर्च किए उन्होंने. 1 विकेट हासिल की अपनी आखिरी ओवर के साथ. छोटी गेंद उसे पंच किया बैकफुट से. 2 रन का कॉल वहां पर लेकिन 1 रन. काफी चुस्त वहां पर मुजक्किर अपनी खुद की बॉलिंग पर 1 रन बचाया. 5 विकेटें गंवा दी है माइनिक्स ब्लास्टर्स ने 104 रन के स्कोर पर. करंट रन रेट 8.55 का. अधिक विकेट गंवाई है यहाँ पर माइनिक्स ब्लास्टर्स ने. अच्छी गति से रन बना रहे हैं. इस दफा कट किया उसे सीधा पॉइंट की दिशा. पॉइंट के फील्डर के हाथ में. डॉट बॉल.
एक बार क्विक रन, इम्तियाज वहां पर पॉइंट में मौजूद, अटैक किया बॉल को, जल्दी वहां पर बॉल की तरफ आए लेकिन क्लीनली पिक नहीं कर पाए, जिसके चलते बैट्समैन ने एक रन लिया। अंकित कुमार पर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज अच्छी गेंद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 33 रन लगाए हैं 24 गेंदों में। इस बार छोटी गेंद उसे पंच किया सीधा आबिद अजहरुद्दीन के हाथ में शॉर्ट कवर्स में। अच्छा ओवर घटता हुआ ये, पिछले कुछ ओवर्स में काफी बेहतरीन गेंदबाजी हुई है आर स्टोन्स की तरफ से। इस दफा फिर से 2 रन की मांग, विकेटकीपर उसके पीछे, 1 रन से संतुष्ट। 3 रन आए हैं पिछले 5 गेंदों में। आखिरी गेंद इस ओवर की, फ्लाइट किया उसे, 1 रन मिलेगा वहां पर। 4 रन इस ओवर से, 13 ओवर की समाप्ति, 107 रन 5 विकेट के नुकसान पर। रोशन अली अपनी दूसरी ओवर लेकर, पहले ओवर में एक विकेट हासिल की थी, 4 रन खर्च किए थे उन्होंने। अच्छी गेंद वहां पर, क्विक सिंगल, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स, दोनों बल्लेबाज काफी चुस्त और काफी अलर्ट। जानते हैं फील्डर वहां पर सर्कल पर मौजूद, पॉइंट पॉइंट का फील्डर, इसीलिए उसे धीमी गति से खेला और 1 रन हासिल किया। बैकवर्ड पॉइंट पॉइंट और कवर पॉइंट मौजूद। इस दफा बड़ी शॉट खेलना चाहते थे पॉइंट की दिशा में, लेकिन 1 रन मिलेगा, इनसाइड एज लगी थी वहां पर, सही ठीक से टाइम नहीं की थी गेंद, और जिसके चलते बल्लेबाज को 1 रन मिला। काफी अच्छा पैसेज ऑफ प्ले यहाँ पर आर आर स्टोन्स की तरफ, अच्छी तरीके से मारा इस गेंद को सीधा कवर्स के फील्डर के हाथ में, डॉट बॉल यहाँ पर। 2 रन इस ओवर से पिछले 3 गेंदों में। इस दफा बॉलर के ऊपर से उसे खेला, सही से टाइम नहीं किया, लेकिन वहां पर फील्डर ने उस कैच को ड्रॉप किया। एक सफलता बन सकती थी, लेकिन ठीक से जज नहीं कर पाए लॉन्ग ऑन के फील्डर, तेजी से भाग कर आए थे। 1 रन मिलेगा वहां पर। अंकित स्ट्राइक पर वापस। इस दफा जगह बनाई, थोड़ा सा रूम दिया और उसे खेला है एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के राइट से, 4 रन हासिल किए। बेहतरीन शॉट ये अंकित कुमार की तरफ से, थोड़ा सा जगह दी अपने आप को और रूम बनाया, उसे बेहतरीन तरीके से टाइम किया और प्लेस किया, गैप में 4 रन हासिल किए। गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर। काफी बेहतरीन शॉट, इसी के चलते फील्ड चेंज, कवर पॉइंट आए हैं फील्डर। इस दफा बॉलर के सर के ऊपर से बाउंड्री लगाई। आखिरी दो गेंदों में 2 बाउंड्रीज, ओवर की समाप्ति, 14 ओवर 118 रन 5 विकेट के नुकसान पर माइनिक्स ब्लास्टर्स।
मोहम्मद इम्तियाज आए हैं अपनी पहली ओवर लेकर। डॉट बॉल के साथ ओवर की शुरुआत। और यहाँ पर संजय स्टॉइनिस ने सिंगल लेकर अंकित कुमार को स्ट्राइक सौंपी। देखना होगा इस ओवर में कैसे खेलते हैं नए गेंदबाज को। अंकित कुमार काफी बेहतरीन गेंद बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 रन की मांग की उन्होंने। अच्छी कॉल वहां पर नॉन स्ट्राइकर की जो मना किया उन्हें। There was never a second run on offer. Could have been curtains for the batter if he had responded to that call. Oh, that was a beauty from Imtiaz, just spinning it away from the batter. The keeper also outfoxed on that occasion from Imtiaz. Empire signals bye. So, 3 runs off the first 4 balls. Ankit getting very anxious. He knows that a boundary is required. Coming down the track this time, plays it with soft hands towards the right of the point fielder and get a single. So 4 runs of the first 5 balls. Last ball, can Imtiaz close this over nicely? अच्छी तरीके से उसे खेला है पॉइंट की दिशा में वापस से। इस ओवर से 5 रन। 15 ओवर की समाप्ति। 123 5 विकेट के नुकसान पर माइनिक्स ब्लास्टर्स। मीर रोशन अली अपनी तीसरी ओवर लेकर 2 ओवर में 15 रन खर्च किए 1 विकेट हासिल की। अच्छी शुरुआत ओवर की 1 रन के साथ। माइनिक्स ब्लास्टर्स चाहेंगे कि एक अच्छा टोटल बोर्ड पर लगाए चैलेंज करें आरआर स्टोन्स को जिनकी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है। एक सी बीच एक बेहतरीन शॉट लेकिन वहां पर शॉट फाइन पर प्लेयर मौजूद 1 रन मिलेगा। शॉर्ट बॉल उसे खेला है स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ और वहां पर 4 रन मिलेंगे संजय स्टॉइनिस को जो काफी समय से बाउंड्री लगाना चाहते थे। फाइनली उन्हें एक हाँ शॉर्ट गेंद मिली और उसे सही नसीहत दी संजय स्टॉइनिस ने। 6 गेंदे इस ओवर से। 6 रन इस ओवर से 3 गेंदों में। अक्रॉस द स्टंप्स गए और बड़ी शॉट लगाना चाहते थे इस दफा। गेंदबाज काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते फॉलो किया। मौका नहीं दिया वहां पर बल्लेबाज को बड़ी शॉट लगाने का। इस दफा आगे आकर उसे खेला। 1 रन मिलेंगे वहां पर अंकित कुमार को। 8 रन इस ओवर से पहली 5 गेंदों में। आखिरी गेंद इस ओवर की। फ्लाइट दिया उसे बेहतरीन तरीके से डिसीव किया बल्लेबाज को। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। 16 ओवर के बाद माइनिक्स ब्लास्टर 131 5 विकेट के नुकसान पर।
इम्तियाज आए हैं अपनी दूसरी ओवर लेकर और पहली गेंद पर उन्हें विकेट मिली, बड़ी सफलता वहां पर। अंकित कुमार बड़ी शॉट खेलना चाहते थे, अपना विकेट गवाया। छठवीं विकेट का पतन। 100 131 for 6 after 16.1 over। नए बल्लेबाज अभिषेक रेड्डी अपना खाता खोला 1 रन के साथ। 132 6 विकेट के नुकसान पर माइनिक्स ब्लास्टर्स। इस ओवर के बाद 3 ओवर बाकी। एक बड़े शॉट की तलाश में, ठीक से टाइम नहीं किया लेकिन शायद वो जाएगी सीमा रेखा के बाहर। हाँ, स्टॉइनिस काफी पावरफुल लैड है। बीच बल्ले के बीचों बीच नहीं आई थी गेंद, लेकिन बाहर जाएगी वहां पर। 6 रन इस गेंद से। थोड़ा सा ऊपर डाला था वहां पर इम्तियाज ने इस गेंद को, और कोई हाफ मेजर्स नहीं संजय द्वारा उसे बेहतरीन तरीके से सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया। बेहतरीन शॉट संजय स्टॉइनिस के द्वारा। आबिद अजहरुद्दीन जैसे ही शॉट खेला वो इंटरेस्टेड थे कुछ वक्त के लिए, और देखा कि गेंद उनके सर के ऊपर से गई। इस दफा और एक बेहतरीन शॉट, शॉर्ट कवर्स के फील्डर के ऊपर से। इस दफा 4 रन मिलेंगे संजय अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। 11 रन इस ओवर से। पहली गेंद पर विकेट मिली थी इम्तियाज को, उसके बाद दो बड़ी शॉट लगाई वहां पर संजय स्टॉइनिस ने। जानते हैं काफी कम ओवर्स बाकी है, इसीलिए अटैक कर रहे हैं इम्तियाज को। हवा में गेंद इस दफा, फील्डर मौजूद वहां पर। लॉन्ग ऑफ पर 2 रन मिलेंगे आसानी के साथ। 13 रन इस ओवर से, आखिरी गेंद आना बाकी। पैड पे डाली हुई गेंद, 2 रन की मांग की है वहां पर, आ जाएंगे बल्लेबाज आसानी से। 2 रन मुकम्मल। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए संजय स्टॉइनिस। इस 2 रन के साथ ओवर की समाप्ति। 17 ओवर के बाद 146 6 विकेट के नुकसान पर।
रोशन अपनी आखिरी ओवर लेकर 3.1 ओवर 23 रन 1 विकेट हासिल किए उन्होंने वहां पर। ये काफी क्रूशल ओवर होगा। अभिषेक रेड्डी स्ट्राइक पर स्विच हिट खेलना चाहते थे, मिस किया कंप्लीटली। सिंगल लेकर वहां पर संजय स्टॉइनिस को देना होगा क्योंकि वो काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। कोई जरूरत नहीं इस तरह के शॉट खेलने की वहां पर अभिषेक को रिस्क लेने की। डॉट बॉल, 3 डॉट बॉल इस ओवर से। प्रेशर बढ़ता हुआ अभिषेक रेड्डी पर। देखना होगा क्या वो बड़ी शॉट लगा पाते हैं। मीर रोशन अली काफी नपी तुली गेंदबाजी कर रहे हैं, मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को बड़ी शॉट लगाने का। अच्छी शॉट वहां पर इस दफा वाइड ऑफ द फील्डर खेला। एक्स्ट्रा कवर पर थे, बाउंड्री पर फील्डर। और यहाँ पर कवर पॉइंट के ऊपर के फील्डर्स ऊपर से खेला था ये शॉट। 4 रन हासिल किए वहां पर अभिषेक रेड्डी ने। सिर्फ 4 गेंदें इस ओवर की हुई है जिसमें 4 रन हासिल किए हैं अभिषेक रेड्डी और माइनिक्स ब्लास्टर्स ने। बड़ी शॉट लगाना चाहेंगे आखिरी 2 गेंदों पर। छोटी गेंद उसे बेहतरीन तरीके से खेला लॉन्ग ऑन की दिशा में दूसरे रन के लिए वापस आते हुए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। लाउड कॉल किया था जैसे ही खेला था, उन्हें पता था 2 रन मिलेंगे। आखिरी गेंद इस ओवर की। और उसे स्विच हिट खेला फील्डर के ऊपर के फील्डर के सर के ऊपर से। आउटफील्ड काफी तेज, यहाँ पर 4 रन मिलेंगे अभिषेक रेड्डी को। अच्छी ओवर थी लेकिन उसे खराब किया इस चौके को लगाकर। 10 रन इस ओवर से। 18 ओवर की समाप्ति। 156, 6 विकेट के नुकसान पर माइनिक्स ब्लास्टर्स। इम्तियाज आए हैं अपनी तीसरी ओवर लेकर। 2 रन के साथ ओवर की शुरुआत। स्कोर 158, 158। इस दफा वाइड गेंद। संजय लेग साइड में खेलना चाहते थे इस गेंद को। थोड़ा सा बाहर रही गेंद जिसके चलते वाइड करा दिया अंपायर ने। इस दफा बॉलर की तरफ चार्ज किया बड़ा शॉट लगाने के लिए। इम्तियाज ने थोड़ी सी लेंथ खींची। डॉट बॉल इसी बीच। 3 रन पहली 2 गेंदों पर। इस दफा बॉलर के सर के ऊपर से खेला लेकिन लॉन्ग ऑफ काफी सीधा, इसके चलते 1 रन मिलेगा वहां पर संजय स्टॉइनिस को। स्कोर 160 रन 6 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 3 गेंदें आना बाकी इस ओवर की। आखिरी मौके पर रुका वहां पर इम्तियाज ने। देखना चाहते थे कि क्या सोच रहे हैं बल्लेबाज। छोटी गेंद उसे पुल किया है मिड विकेट की दिशा में 1 रन के लिए। संजय वहां पर एक बड़ा शॉट जरूर लगाना चाहेंगे इस ओवर में। अच्छी गेंद, काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए इम्तियाज। 2.5 ओवर 25 रन 1 विकेट हासिल किए उन्होंने। आखिरी गेंद इस ओवर की। अक्रॉस द लाइन गए और उसे खेलना चाहते थे शॉट फाइन लेग के फील्डर के ऊपर से। कीपर वहां पर कलेक्ट नहीं कर पाए। और यहां पर एम्पायर का दिशा इशारा 22।
164 after 19 overs. 164। अच्छी ओवर वहां पर इम्तियाज की। आवेज अहमद अपनी आखिरी ओवर लेकर, इनिंग्स की आखिरी ओवर। 164 रन्स, 6 विकेट के नुकसान पर। एक रन के साथ ओवर की शुरुआत। कोई मौका नहीं देते हुए बल्लेबाज को बॉल के अंदर जाकर उसे बड़ी शॉट लगाने के लिए। आखिरी 5 गेंदें। हवा में गेंद और सीधा इम्तियाज के हाथ में। इस दफा कोई गलती नहीं इम्तियाज के द्वारा। अभिषेक रेड्डी अपनी विकेट गंवाते हुए। 165 for 7 after 19.2 overs। राम, आखिरी 4 गेंदें बाकी इस ओवर की। राम स्ट्राइक पर मौजूद। देखना होगा क्या कर पाते हैं इस चांद के 4 गेंदों में राम। क्या वो बड़ी शॉट लगा पाते हैं, देखना होगा। छोटी गति, छोटी थी ये गेंद। इस दफा उसे बैकफुट से पंच किया। 2 रन के लिए वापस आते हुए। अच्छी शॉट, लेकिन बेहतरीन एफर्ट तीसरे रन के लिए आते हुए यहाँ पर। और एक रन आउट। तीसरा रन वहां पर नहीं था, लेकिन राम लेना चाहते थे तीसरा रन, जिसके चलते उन्हें अपनी विकेट गंवानी होगी। विकेट अपनी टीम के लिए गंवाया। 167 for 8। संजय बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए, 2 रन वहां पर मिले उन्हें। इस दफा इनसाइड एज और वो गेंद जा रही है फाइन लेग की दिशा में। 1 रन मिलेगा संजय को। काफी बेहतरीन ओवर ये यहाँ पर घटता हुआ आवेश अहमद के लिए।
6 रन दिए अपने आखिरी ओवर में। एक गेंद अभी आनी बाकी। 170, 8 विकेट के नुकसान पर माइनिक्स ब्लास्टर्स। और यहां पर एक सफलता हासिल की आखिरी गेंद पर अपनी। इस ओवर में 3 सफलताएं मिली वहां पर, एक रनआउट के फॉर्म में। 9 विकेट गंवाए वहां पर माइनिक्स ब्लास्टर्स ने। टॉस जीता और बल्लेबाजी का निर्णय लिया। 170 रन बनाए। 171 टारगेट होगा वहां पर आरआर स्टोन्स के लिए जब वो बल्लेबाजी के लिए वापस आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम वापस आएंगे सेकेंड इनिंग्स रन चेस को लेकर। कहीं जाइएगा नहीं।
Welcome back. After the break, we are right back with the run chase and Abed Azharuddin and Mohammad Imtiaz out in the center for the RR Stones. Abed Azharuddin has got off to a flyer. 10 runs of the first two balls. This time straight to the man at s- cover point. Shreyas Iyer to start the proceeding from the pavilion end. Again in the slot, again out of the park. That's a big hit. That's a monstrous hit from Abed Azharuddin. He's known for this. What a shot, man. This is stand and deliver. It's fireworks going on at the ground from Abed Azharuddin. We are only four balls into the innings and we have lost two balls. Courtesy Abed Azharuddin. Such a class act. Such a clean striker of the cricket ball. They call him Telangana's Chris Gale, and you know why. Again in the batsman's arc. Again it's going only one way. It has gone the distance. This time not going that far, but it has gone the distance. 22 runs coming off the first over. What a shot. Once he sees that it's in his half, there's no half measures. He goes after that one. And 22 coming off the first over. Shreyas Iyer taken to the cleaners in his first over by Abed Azharuddin. The medium pacer Naresh introduced into the attack starts with a fuller one on the body, on the pads of Mohammad Imtiaz, who has worked away nicely towards the deep mid wicket for a single and gives the strike back to dangerous Abed Azharuddin, who's striking nicely at the moment. Change in field for the left-hander. The long on pushed back. There's a man at sweeper cover. Abed is looking in a hurry, but that's how he bats. Nicely bowled, taking the pace of the ball, cramping the batsman for room. Abed looking to play that one on the leg side. This is smart from Mohammad Imtiaz, having a word with Abed, just letting him know what the bowler is trying to do. These two plays for the same team are Stones and oh my god, you'll have to watch out in the other ground. That's how far he has hit that one. It's not less than a 120-meter six. Wow, it has gone halfway in the other ground. What a shot! 28 of just 8 balls. That's a beautiful shot. He's such a clean striker. When he hits, it stays hit.
taking the pace off this time and the ball not bouncing enough for Abed to go for the biggie again. So Abed does not believe in singles. He's only stand and deliver stuff from Abed Azharuddin. 28 of 9 balls so far. And this time over covers. Wow, that's so effortlessly done. He has a very good swing of the bat, and it's the fourth ball that he has hit. I think it's the fifth ball that he has hit out of the park. 34 of 10 on the pads and out of the park. Boundary of the last ball of the over. After 2 overs, it's 39 without loss after 2 overs. Sanjay Stoinis into the attack, starts with a short one and pulls away over the square leg fielder for a boundary. This time Imtiaz joins the party and says, Abed Azharuddin, that mate, have a look at that one. I too have got some shots. Both of these batters are very explosive, likes taking the bowling on. We have seen a lot of these guys in the Hyderabad corporate cricket. Nicely played. Respecting the good balls. Usually, Mohammad Imtiaz likes to dominate, but his batting, his batter on the other end is such in red hot form, in such a nice nick that he has to play the second fiddle. Punched away to the man at point for a single. This is what I was talking about. He's happy to play the second fiddle. He knows when there's no better side in the world than saying Abed Azharuddin bat in full flow. One of the clean strikers in Hyderabad. His record speaks such a staggering strike rate Abed Azharuddin has. 3 balls left in the over, mid wicket and long on the boundary. Oh, that was hit furiously. Well stopped by Sanjay off his own bowling. A very rare dot ball. Dot ball again.
Last ball of the over coming up. It's down the leg side. He has to reball that one again. So the idea is right. Cramp the batsman for room and not give any pace to Abed Azharuddin because he likes pace on the ball. It's good over so far from Sanjay Stoinis. Just 6 runs off this over with a ball to go. Nicely hit that one. Calls for a single, but Imtiaz says, no, I want to have a strike. Dot ball to finish the over. After 3 overs, 45 without loss. Ankit introduced into the attack, coming on the back of a very good performance in the one day that he has played. The last match, 10 overs, one made in 47 runs, 4 wickets to his name for the one day that he has played. Ankit, a very tough time to bowl, but he's coming out of a very good outing in the previous game that he has played, the one dayer that he has played. Boundary of the first ball. Imtiaz. That was done so easily. Abed Azharuddin striking at 271 at the moment. Just one shy away from 50. The leg, the leggy. It's wide. The score moves to 50 with the help of that wide. So there's a saying that if you want to get Abed Azharuddin out early, you have to ball spin, which is what the Minex blasters have done. But Abed Azharuddin was equal to the task. It's in the air, and a first wicket has gone down. Imtiaz looking to play the big shot perishes. The first wicket has gone down for the RR Stones, and it's the dangerous Mohammad Imtiaz who is walking back to the pavilion after scoring 10. Mahesh, the man at short fine leg, who took that catch. 50 for 1.
Stoinis to continue. Yes and no. In the end, rightly sent back by Avinash. Dot ball to start the over. In the air, chance. The fielder settling underneath, and he makes no mistake. Abed Azharuddin has to walk back to the pavilion. Shreyas Iyer, who was taking the beating in the first over, took that catch to get rid of Abed Azharuddin, who's walking back to the pavilion on the score of 38 of just 16 balls. It's 58 for 2, the RR Stones.
This has been a good comeback from the Minex Blasters. They were shocked. They were put on the back foot in the power play. Abed Azharuddin took them to the cleaners in the first 2 overs, but after that, they have pulled things back nicely and they have got a couple of wickets as well. 3 wickets after that, and now the score is 70 for 3 in the eighth over. So far, they've pulled things back nicely, but they need a couple of more wickets here. These two batters haven't got going. It's in the air, chance. Oh, that was a difficult one. That was traveling. Shiva the man at long off rather. It was traveling flat and hard. He got two hands to it. In the end, couldn't hold on to that one. It's a single. Again, pace off. Short ball pulled away, and it has gone the distance. Good looking shot from Roshan Ali and got the desired result out of that one. Finally, that should break the shackles for the RR Stones. 94 required of 73 now. Cut away nicely. The call was for a single, but rightly sent back by Vaishnav Reddy. Dot ball to finish the over. After 8 overs, it's 77 for 3. Ankit Kumar back for his third overs. 2 overs, 20 runs, 2 wickets for Ankit. That's what confidence does. He was very confident heading into this match, and he has dismissed both the first. It was Imtiaz who got dismissed of his bowling. So he's got a couple of wickets up his sleeves. Now he's up against me, Roshan Ali and Vaishnav Reddy. Plays it off the back foot to the man at long off for a single. गूगली यहाँ पर उसे बेहतरीन तरीके से वेट किया, शॉर्ट थर्ड की दिशा में गाइड किया, 1 रन मिलेगा वहां पर। दोनों बल्लेबाज
Back to back boundaries for Vaishnav Reddy. First it was on the offside and then on the onside. So good over comes to an end. 12 runs coming off that over. After 9 overs, it's 89 for 3. Boundary coming for Mir Roshan Ali. That was slightly short. He was comfortable off the back foot and depositing that one towards the cow corner boundary. Roshan Ali at his very best. He likes taking the time initially, but once he has his eye in, we all know what he can do with the bat. We have seen that in the last match of the RR Stones. He was the lone warrior. Again, today he has a job to do with the bat because his team has been pushed on the back foot after got off to a flyer. This time over covers, nobody moves. One bounce and into the fence. That's stand and deliver. What a shot from Mir Roshan Ali. That's very pretty. That was in his half, and he says thank you very much and gets down on his knee and lifts it over the short cover fielder for a boundary. 2 in 2 for Roshan Ali. So runs are coming thick and fast for the RR Stones now again. This time the pace taken off. Roshan again looking to repeat the same shot. Gets a single to long on. Is signaling that the bowler rolled his finger on the ball. Single to complete the over after 10 overs. It's 99 for 3 after 10 overs. The players will have drinks now.
Shivansh introduced into the attack in the 11th over. Started off nicely, Shivansh. Three dot balls in a row now. RR Stones need another 71 runs of 56 balls. Nicely played. This time, Mir Roshan Ali waited for the ball to come to him and then pierces the cap to perfection to get that boundary. So 5 runs coming off the first 5 balls. Last ball of the over coming up. First boundary coming in from the far end. They'll get a couple of runs here. The misfield will allow Roshan to come back. And no, they'll settle for a single. So 6 runs coming off the 11th over. After 11 overs, it's 105 for 3. The new bowler is Abhishek Reddy in the attack. So they are trying a few new different bowlers to break this partnership because this partnership is taking the game away from the Minex Blasters. Starts with a full toss. It's a beamer. Nicely played by Mir Roshan Ali. Immediately the umpire signals no ball and a warning to Abhishek Reddy. So the free hit will be coming up. It's a good chance for Vaishnav Reddy to play the big shot. There's a there's a lot of wind blowing across the ground, so will not be an easy task for the batter to hit the big shot because there's a lot of wind coming in from the far end. Full toss and it's out of the park. That's a hit me ball. No batter will miss out on such a good ball. And adding to that, it was a free hit as well from Abhishek. So Vaishnav Reddy moves to 27 with the help of that 6. They need now 58 of just 53 balls. So it's getting easy for the RR Stones, courtesy a very good partnership between this Roshan Ali and Vaishnav Reddy. Short ball cut away between the two fielders, backward point and sweeper cover. But the fielder from sweeper cover will cut it off. Single of the second ball of the over. This one rightly in the block hole. Roshan Ali playing comfortably gets a single and gives it back to Vaishnav Reddy. So these two batters are very busy at the crease.
8 run. Short ball, nicely played off the back foot. No chance for the sweeper cover to cut that off. That was hit so nicely from Vaishnav Reddy. He gave no chance to the sweeper cover fielder to cut that off. He moves to 32 with the help of that boundary. 14 runs coming off the first four ball of this over, turning out to be a very expensive over. This time balled it into the wicket, taking the pace off the batter was way early in his shot. Good change of pace from Abhishek Reddy. Bumper again, pulled it nicely. Single of the last ball of the over. After 12 overs, it's 120 for the loss of 3 wickets. शिवांश अपनी दूसरी ओवर लेकर आए हैं। पहली ओवर में 6 रन खर्च किए थे उन्होंने वैष्णव रेड्डी के अगेंस्ट गेंदबाजी करते हुए। वैष्णव रेड्डी एक बेहतरीन साझेदारी के साथ अक्रॉस द स्टंप्स गए, विकेट एक्सपोज किया और उसे खेलना चाहते थे फाइन लेग की दिशा में। कोई संपर्क नहीं बल्ले का गेंद से। इम्प्रोवाइजेशन जो कि सारे बल्लेबाज करते हैं इस फॉर्मेट में, और वैष्णव भी वही करना चाहते थे इस दफा। थोड़ा सा लेट हो गए इस दफा। उसे बैकफुट से खेला है, थोड़ा सा वाइड लॉन्ग ऑफ के फील्डर से। दो की मांग की थी लेकिन 1 रन से संतुष्ट। Handsomely driven through the covers by Roshan Ali. The call is for two again. The fielder from mid off is very quick across the turf, so it will only be a single for Roshan. Both of these batters complement each other very nicely. They need just 49 runs to win this match of 45 balls. If they stay on the crease, it won't be a difficult chase for the RR Stones. They know that these two batters are very quality. Short ball into the wicket. Again, the pace taken off. The batsman waiting for the ball to come to him and opens the face of the bat, plays it to point fielder who is exactly at the circle. So easy single for Vaishnav Reddy. स्लॉट में थी इस दफा, उसे लिफ्ट किया ओवर द कवर्स। 6 रन वहां पर रोशन अली के बैट से। थोड़ा सा मौका दिया और रोशन अली ने उसे बेहतरीन तरीके से नसीहत दी। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी होते हुए दोनों छोर से। 129 3 विकेट के नुकसान पर एक अच्छा ओवर घटता हुआ। 9 रन इस ओवर से, आखिरी गेंद आना बाकी। ड्राइव किया उसे गैप में, 2 रन वहां पर इजीली मिलेंगे वहां पर रोशन अली को।
काफी बेहतरीन बल्लेबाजी होती हुई इस 2 रन के साथ 13 ओवर की समाप्ति 131 3 विकेट्स डाउन। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी होते हुए इसी बीच लेग स्पिनर को लगाया है कप्तान ने। माइनिक्स ब्लास्टर्स के एक विकेट की तलाश में अंकित कुमार आए हैं। 3.1 ओवर 32 रन 2 विकेट हासिल किए उन्होंने। ये पार्टनरशिप 67 रन 46 गेंदों में दोनों बल्लेबाज काफी बेहतरीन तरीके से खेल रहे हैं। अच्छी शॉट वहां पर वैष्णव रेड्डी की तरफ से 1 रन मिलेगा लॉन्ग ऑन की दिशा में। रिक्वायर्ड रन रेट 6 के अंदर अब आ चुका है। करंट रन रेट 9.90। ओ यहां पर एक खराब शॉट रोशन अली के द्वारा। फुल टॉस थी, उसे बड़े शॉट के लिए खेलना चाहते थे, कंप्लीटली मिसजज किया लाइन को, लेंथ को, और वहां पर अपनी विकेट गवा बैठे। That was a full toss, and it was there for Roshan Ali to hit that one out of the park. He tries to hit that one very hard. In the end, no contact with the ball. He loses his shape and has to depart. The fourth wicket has gone down on the score of 132. और वहां पर एक खराब एफर्ट फील्ड में, जिसके चलते डॉट बॉल होनी चाहिए थे। 4 रन मिले वहां पर। अपना खाता खोला सूर्या ने 4 रन के साथ। इसे बैकफुट से खेला था, सीधा पॉइंट के फील्डर के हाथ में, डॉट बॉल। एक सक्सेसफुल ओवर अंकित को बुलाया था कप्तान ने एक विकेट निकालने के लिए, उन्होंने विकेट निकाली। उसके बाद एक खराब एफर्ट फील्ड में, जिसके चलते 4 रन मिले वहां पर सूर्या को। छोटी गेंद उसे सीधा कवर के फील्डर के हाथ में खेला। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। 35 रिक्वायर्ड ऑफ लास्ट 6 overs। 35।
That's a very soft dismissal on the first ball of the over. Shreyas picks up Vaishnav Reddy. That was a half tracker, and Vaishnav just played it straight to the man at long off, Shivansh. The moment he played the shot, he turned back and walked back towards the dressing room. How confident was he? That was a catching practice from Vaishnav. The fifth wicket has gone down. It's 136 for 5. Oh wow, what a turnaround! What a turnaround. First it was the well set Reddy, and then now Surya who's walking back to the pavilion. 2 in the over for Shreyas Iyer. It's 137 for 6. Is there a twist in the tail? The new batsman in is Awais Ahmed, gets off the mark to long off. This match is getting interesting. 33 required of 31 balls for the Ara Stones. On the other hand, the Minex Blasters need another 4 wickets to win this match, so it can be anybody's game.
It is still in the balance. Single of the last ball of the over. After 15 overs, 139 for 6. 32 required of 30 balls. Sanjay Stein is back for his final over. Starts off with a single. This is getting very interesting. Both the teams fighting hard. Both good teams fighting hard for each run and each wicket. That's what you want from two good teams. And we are seeing a very good encounter between the Ara Stones and the Minex Blasters. I would still say the batting team is still the favorites at this point of the time. They still have 4 wickets in the tank and they have some batting to come. It's just a run a ball required, 20, 31 required of 28 balls. So you know that one boundary and the pressure right back on the bowling side. So I'm still backing the batting side to get this done, to get home. But anything can happen in this game. On the pads this time, worked away towards the square leg region for a single. Just a couple of minutes back. This time it's in the slot and it's a boundary for Karan, Karan Patnaik. He lifted that one wide of the long on fielder who covered a lot of ground, got to the ball, got two hands to it, but couldn't hold on to that catch. Excellent effort in the field, 10 out of 10 for that effort, but it's still a boundary coming in favor of the RR Stones. 6 runs coming off the first 4 balls. This time the batter moving across his stumps, looking to play the scoop shot. For some odd reason, Karan did not even run. It's only a single for such a good shot. He might have got three, at least two for that shot. There's poor running between the wickets from the batters, Aves and Karan.
That should have been at least two, if not three. The captain from the dressing room not happy with that, shouting at the batter. This time, nicely played by Awais Ahmed with soft hands to get a single to finish the over. 16 overs completed, 147 for 6, 24 required of 24 balls. Shivansh back for his third over.
Starts with one into the wicket. The pace of delivery played it to the man at long off for a single by Aves Ahmed. Again a short ball played it towards the mid wicket. They're looking to come back, but they'll have to settle for a single. So good cricket all around. Aves gets the strike back. Both these batters are doing relatively good at the crease, just rotating the strike, keeping the scoreboard ticking. 'What a shot! This is an excellent shot from Aves Ahmed. That was Fuller. He just plays it in the gap between the short cover and the sweeper cover fielder to get that boundary. This should ease the pressure on both these batters. Now the required is just 11 runs of 14 balls. This time to the other side of the ground towards the cow corner and gets a boundary. Aves Ahmed is dealing in boundaries. Just 7 required of the last 13 balls now. 7 required of 13 balls. Right in the block hole. Dot ball to finish the over. After 18 overs, it's 164 for 6. Shreyas Iyer to continue back for his fourth over. This will be a make or break over. 7 required of the last 2 overs. And Karan has hit the first one out of the park. That's a good shot. Wow, what an amazing shot. A very short man in stature, but he packs the big punch. That was that was slightly short. He went down on his knees off the back foot and hits that one over the square leg boundary for a 6. Just a single required now. Nicely bowled, that was.
from Shreyas Iyer, giving a lot of air to the ball. Karan looking to play the big shot. This time takes it on the full and hits it out of the park. Six to finish the innings, and the RR Stones have won this match by 4 wickets in just 18.3 overs. The Minex Blasters, after winning the toss, deciding to bat first, have put up 170 runs on the board. In reply, the RR Stones have chased this down in 18.3 overs. And the man of the match is Awais Ahmed for his all-round performance. 18 runs, 18 crucial runs with the bat when his team was needed, and 3 wickets with the ball. 4 overs, 38 runs, 3 wickets for Awais Ahmed. The RR Stones getting across the line in 18.3 overs with 4 wickets to spare. That's all we have for this match. Do join us next week. Congratulations to the RR Stones for winning this one quite comprehensively. Awais Ahmed, man of the match for his all round performance.